हेलो एवरीवन सो आई होप यू गाइस आर बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक। तो बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे CSIR UGC नेट JRF के बारे में। सो लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस about this particular examination. So before that, I would like to introduce myself. I am Shruti. I qualified one of the most prestigious examinations of India. That's CSIR UGC NET JRF with 99 percentile with an all India rank 37. I qualified GATE as well. Moreover, I was shortlisted and considered for various PhD and JRF positions as well in like prestigious institutions like IISc, Indian Institute of Science, IIT, AIMS, TIFR, NII, CSIR, IGIB, and other renowned institutions. I got selected in IISc. I got a project and project offer from IISc, TIFR, ACBR, DU, and yes, I got I was shortlisted. I got selected in Biocon certificate program as well. And I guess I cracked almost all state level or national level examinations of India. I was the university topper in biotechnology as well, and I gathered international offers and publications. Along with this, I have multiple offers from the United Kingdom, from various universities which carry weightage worldwide, a wonderful QS ranking, top world ranking institutions. First one is University of Birmingham. I guess QS World ranking is 87 or maybe 85 this year. Barts Cancer Institute, that's Queen Mary, University of Liverpool, University of Bath, Sussex, and University of Dundee. And I guess Newcastle University as well. So I was basically considered for research program in these institutions in the stream cancer, biology, and cancer sciences. And I guess drug discovery also I got in the University of Bath. So it was a beautiful experience. I would like to share this later. Now, talking of the latest publication, my research, recent publication was beautiful, excellent work on cancer and transcriptomics. So we were looking for various associations between miRNA, mRNA, and metabolites which are involved in PDAC. That's the pancreatic ductal adenocarcinoma. And we utilized certain bioinformatics tools. We conducted experiments in England. Research fellows were conducting the experiments and utilizing these latest like computerized tools, bioinformatics tools, and even I would say the latest knowledge of computers. Our paper got published in a very wonderful journal in a Q1 quartile journal, which was a collaborative work with the eminent scientists from the University of Birmingham and other research fellows from England and other universities. So it was basically under the guidance of Dr. Animesh. He is a scientist and an assistant professor at Birmingham University in the Department of Cancer and Genomic Sciences. And yes, I remember while I tracked an interview, I was selected in research, as I stated. I guess the faculty were scientists, Dr. Ellie and others. So a lot of things I'm gathering. So again, these things would be discussed later with you fellows. And about research paper also we could discuss. So now coming to our the thing, अब जो है असली में हम जो बात करें कि एग्जाम के बारे में, जो एग्जाम ये है क्या, so what exactly CSIR-UGC NET is, why CSIR-UGC NET ये है क्या? So this is basically a national eligibility test. So earlier it was conducted by NTA and I hope you are familiar कि जितने भी recruitment exams होंगे अब NTA कंडक्ट नहीं करेगा. So NTA ने कंडक्ट किया था पहले, बट अब जो लागू हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं, ट्विटर पे आप लोग देख सकते हैं.
won't be conducted by the NTA. So it is, yes, one of the toughest examinations, not only in India, but also worldwide. So world में भी इस एग्जाम का नाम जाना जाता है, काफी टफ है, रिनाउंड है और बहुत ही बढ़िया एग्जामिनेशन होता है. एंड इट मेक्स अस, इफ वी क्रैक दिस, इट मेक्स अस एलिजिबल टू बी अ जूनियर रिसर्च फेलो और अ लेक्चरर. सो पहले जो होता था, जब हम लोग इसको क्रैक करते थे, देवर बेसिकली कुछ ऐसे इस तरीके से नहीं था कि कैटेगरीज है 1 2 3 है, जैसे कि अब हो गया कैटेगरी 1 2 3. So either once we crack this, either based on our percentile or score, either we would a candidate would be eligible for JRF, or if he or she cracks NET, he or she would be a lecturer. So इस तरीके से था. But now it's like category 1 is for JRF, category 2 is for NET or LS or lecturership, and category 3 is for enrolling into PhD in various national universities or state level universities. तो इस तरीके से ये एग्जाम है जो हमको एलिजिबल करता है पीएचडी, बेसिकली पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए नेशनली और स्टेट लेवल और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी. तो काफी बढ़िया एग्जाम है. If we talk of the eligibility criteria, so graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही एलिजिबल होते हैं. सो पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम लोग बात करें, सो मास्टर्स इन साइंस, एमएससी, इवन बीटेक और बी पीपल आर एलिजिबल. ये भी कुछ नया लागू हुआ था कि 4th ईयर के जो होते हैं, 4th ईयर और 6th सेमेस्टर और जिनका 8th सेमेस्टर है, तो फाइनल ईयर में जो है दे वुड बी एलिजिबल फॉर टू अपीयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. एंड किस बेसिस पे है, दे हैव लाइक गिवन द परसेंटेज एज वेल. सो वी हैव टू गो थ्रू द ब्रोशर, जो इनका ऑफिशियल ब्रोशर होता है, बहुत ही अच्छे से हम लोगों को रीड करना होता है. So now, because we are like, we would be appearing for this exam, so it's not like we have to say tata bye bye to rote learning. अब इस तरीके से नहीं है कि direct questions पे होंगे. We have to use our analytical senses और logistic skills जितनी भी है. तो ये जो एग्जाम है उस बेसिस पे होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ फ्रेम. सो ये भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. सो इवन नाउ इंटीग्रेटेड बीएस एंड एमएस candidates are eligible. Along with this, B Pharma candidates are eligible, MBBS or those candidates who are carrying equivalent degrees, they would be eligible to appear for this particular examination. So please go through the brochure. बहुत अच्छे से हम लोग को one by one एक एक चीज जाननी है, in depth समझना है. ब्रोशर को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है ऑफिशियली बेसिकली. Talking of these like subjects, so there are 5 subjects in CSIR-UGC NET. We are not talking of UGC NET because that's for other streams. CSIR की बात करें, so subjects are 5: chemical science, earth science, life science, physical science, and mathematical science. So we would be appearing for life science. So based on our interest, we would choose that particular subject. Even if you are like interested in mathematical science, अगर आपको mathematics पसंद है, you would be eligible to appear for mathematical science as well. So yes, we would be talking of life science basically, क्योंकि ये हमारा subject. चलिए आते हैं career opportunities पे. सारा खेल जो है इस तरीके से होता है कि करियर क्या है, स्कोप क्या है. तो क्या if we track this particular exam, तो क्या इसका करियर, इसका आगे जाके करियर क्या है, कुछ स्कोप है या नहीं है. तो डेफिनेटली स्कोप करियर है और बहुत बढ़िया फैंटास्टिक करियर है if we crack this examination. So first of all, yes, we would be eligible to appear in PhD programs in the top universities or industries or laboratories of India. We could be an assistant professor or lecturer as well. Along with this, if we crack JRF, we would be working in various laboratories as project fellows or research fellows. We could be junior scientist as well. Starting की बात करें हम यहाँ पे. Later on, we would be like senior scientist बन जाते हैं और senior positions हम लोग को मिल जाती है, like professorship हो जाता है, associate professor हो जाते हैं. Once we publish a lot of good publications and all, and technical staff के लिए भी और technician के लिए भी, we would be like, we would get if we crack this particular exam.
बहुत अच्छा स्कोप है इस एग्जाम का, अगर हम लोग इसको क्रैक कर जाते हैं तो। अब बात करते हैं, देखिए, रिसर्च लैबोरेटरीज की और यूनिवर्सिटीज की इंडिया में। तो अगेन अ लॉट ऑफ बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटीज लैबोरेटरीज हैं इंडिया में, जैसे कि बायोकॉन है, विच इज द नंबर वन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन इंडिया, known internationally as well। तो इसके बारे में आई होप यू आर फैमिलियर, इफ नॉट प्लीज गो थ्रू, पढ़िए इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। डॉक्टर किरण ने स्टार्ट किया था, सो इट्स ब्यूटीफुल स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी of the CEO who found Biocon. And yes, research laboratories, fantastic research laboratories की बात करें, so that's at IISc, Indian Institute of Science, Bangalore, IITs, various IITs, we would be eligible. CSIR labs, 37 CSIR, 37, 38 CSIR labs are there in India. DRDO, BARC, Baba Atomic Research Center, TIFR, that's Tata Institute of Fundamental Research, ISRO के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, and ICMR, so a lot of research laboratories, topmost institution, we would be eligible if we crack this examination with a fantastic rank or fantastic percentile. Talking of CSIR institutions, here is the data. So as we discussed, there are 37 laboratories, units हमको दिख रही है यहाँ पे, extension centers are there. So please go through more. We should be more curious. So जितना भी है, कितने साइंटिस्ट रहे हैं, क्या कितने पेटेंट्स रहे हैं, SCI पब्लिकेशंस कितने रहे हैं, एंड लैबोरेटरीज कितनी हैं, कितने आउटरीच सेंटर्स हैं, इनोवेशन सेंटर्स है, वी शुड लाइक मोर डेटा आप लोग कलेक्ट कीजिएगा। सो यस, अगेन बहुत ही बढ़िया स्कोप है, वी आर डिस्कसिंग करियर अपॉर्चुनिटीज इफ वी क्रैक दिस। सो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है ये सब जानने में। डज दिस एग्जाम carry international weightage? Yes, it does. It is globally recognized. ना खाली ना केवल इंडिया में इसको if we crack this respectable एक opportunity मिलती है, respectable job मिलता है, we even gather respect and like overseas or abroad. There's a lot of scientists, lot of Indian scientists are there in the US, in the United Kingdom, Germany में बहुत, अब तो बहुत सारे वहाँ पे साइंटिस्ट अवेलेबल हैं। तो it is like it has got an international weightage, a global recognition is there of this particular examination, not just in India. Talking of the exam pattern, अगर हम लोग exam pattern की बात करें, लाइफ साइंस की बात करें, देखिए यहाँ पे आई रिपीट, तो लाइफ साइंस एग्जाम पैटर्न, इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट ए बी सी। सो पार्ट ए इज जनरल एप्टीट्यूड in which we have to opt for or solve 15 questions out of 20. Part B is subject specific, and yes, part C is also subject specific. So part B is like we have to solve 35 questions out of 50. In part C, we have to solve 25 questions out of 75. तो ये पैटर्न है लाइफ साइंस का। अगर हम लोग दूसरी स्ट्रीम्स की बात करें तो पैटर्न यहाँ से चेंज हो जाता है। If we talk of the total marks, it's 200. It's MCQ, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है ये, MCQ आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, एंड ये CBT मोड में होता है, कंप्यूटराइज्ड एग्जाम है ये। Duration, time duration is of 3 hours. And talking of the negative marking, क्या negative marking है? Yes, negative marking है, and that's 25%. And what's exactly 25%? Probability की बात करें तो क्या ये 1/4 negative marking है? 25% कह सकते हैं। तो ये एग्जाम पैटर्न हुआ CSIR-UGC NET लाइफ साइंस का। सिलेबस, life science syllabus में we know, we are aware, if we don't know, please go through. There are totally 13 units. The first one is molecules and their interaction relevant to biology. Second is cellular organization.
Third is fundamental processes. Fourth is cell communication and cell signaling. Next is developmental biology, system physiology, which is in plant and animal physiology, inheritance biology, which basically means genetics. The next comes diversity of life forms, ecological principles, followed by evolution and behavior. And most interesting units are applied biology and methods in biology. So these are basically 13 units. 13 units are there in CSIR UGC नेट लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए यूनिट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे ये है क्या। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ CSIR UGC नेट एग्जाम, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत सारे एस्पिरेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हम लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, यूज्ड टू आस्क कि क्या ये एग्जाम एक्चुअल में टफ है, इफ नॉट व्हाई ओनली फ्यू सिलेक्शन। अगर ये एग्जाम आसान है तो सिलेक्शंस इतने कम क्यों है, क्या हम इसको क्रैक कर सकते हैं, क्या ये एक्चुअल में टफ है। अगर हम इस एग्जाम के लिए अपियर करें, वी आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम, व्हाट एक्चुअली इज नीडेड टू क्रैक दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो बहुत सारी चीजें हम लोग जो है अभी डिस्कस करते हैं। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी की देखिए, अगर हम लोग बात करें, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें देखिए यहाँ से शुरू होती है। तो 5 थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर, 5 थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एग्जाम है, वी शुड हैव नंबर 1 कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बिना ये एग्जाम इट would not be able, we would not be able to crack this. So concepts have to be very, very, very clear. Next is deep understanding. जो भी यूनिट्स हैं उनके बारे में हमको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो डीप और कोर अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी देयर। एंड थर्ड, जो बहुत रिपीटेडली आई हैव बीन शेयरिंग विद मेनी रिसर्च एस्पिरेंट्स, गाइडिंग देम की स्ट्रैटेजी 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी के बिना तो दिस एग्जाम वुड बी लाइक इम्पॉसिबल तो नहीं कहना चाहिए, बट डिफिकल्ट जरूर हो जाएगा। सो इफ वी आर फैमिलियर, स्ट्रैटेजी अगर हम लोग को पता है तो ये जो एग्जाम है ये आसान हो जाता है। आसान कैसे होता है चलिए वो भी समझते हैं। सो कैन वी क्रैक इट, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। इज इट टफ, वो भी आपको अभी पता लगेगा। So conceptual clarity, deep understanding, strategy. 5 important things as we discussed. The first one is like, let's start from the very beginning. That's part C. Part C. पार्ट सी जो होता है वो बहुत ही रिसर्च एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को सबसे ज्यादा टफ लगता है। दे आर लाइक कि भाई ये तो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, बहुत ही ज्यादा लाइक ब्रेन, दिमाग खराब करने वाला ये सेक्शन है। बट व्हाट इफ आई वुड से दिस इज द इजीएस्ट। ये जो है ये सेक्शन ये काफी आसान है। दिस इज एक्चुअली द इजीएस्ट इफ वी कंपेयर पार्ट ए एंड पार्ट बी। कैसे? ऐसे तो जो क्वेश्चंस जो होते हैं वो फ्रेम जो होते हैं पार्ट सी में, दीज आर बेसिकली एप्लीकेशन और रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस दे फ्रेम, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हमको सिर्फ जो है देखिए इंटरेस्टिंग बात ये, हमको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने आउट ऑफ 75। तो आसान तो ये यहीं से हो गया, क्या हम लोग 75 क्वेश्चन में से 25 नहीं कर सकते? कितने ज्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर। सो वी कुड इवन गेन फुल मार्क्स, टोटल मार्क्स जो 100 का है ये, तो फुल मार्क्स यहाँ से हम लोग ग्रैब कर सकते हैं इफ वी हैव बहुत अच्छे से हम लोगों ने यूनिट्स को समझा है और यस इंटरेस्टिंगली समझा है। तो
तो yes, a lot of options, because of which this is one of the, like, this is the easiest section. तो पार्ट सी पे फोकस कीजिए. पार्ट सी से अगर हम लोग और कॉरिलेट करें तो बहुत ही अच्छी हम लोग को रेफरेंस बुक्स जो गाइडेंस है, वी वुड बी गाइडिंग यू फॉर द सेम. रेफरेंस बुक्स हमको बहुत अच्छी पता होनी चाहिए, स्पेशली द इंटरनेशनल वंस. फॉर इंस्टेंस सिक्यूबी हो गया, लेनिंजर हो गया, प्रेस्कॉट हो गया. तो अलग अलग स्ट्रीम्स की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग इंटरनेशनल रेफरेंस बुक्स हैं, तो वी हैव टू रिफर दोज. एंड अगेन अच्छे से एक एक टॉपिक जो भी दिया हुआ है सिलेबस में वो हम लोगों को समझना है. इस तरीके से हमको पार्ट सी पे फोकस करना है. नेक्स्ट इज, सो दैट्स अबाउट पार्ट सी. नेक्स्ट पॉइंट इज एनालिटिकल थिंकिंग. एनालिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स की अगर हम लोग बात करें, सो वी हैव टू इनकलकेट, वी हैव टू बी फैमिलियर विद कि अब टाइम जो हो गया है एनालिसिस का हो गया है. तो ऐसा नहीं है कि वी हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन और फटाफट हम लोग जो है ऑप्शन को ऑप्ट कर देंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. वी हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी 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 केयरफुली, इंटरप्रेट करना है बेसिकली. फिर उसके बाद तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, ये जानना है कि कहाँ से ये किस तरीके से जो है इसको कनेक्ट करे, देन इंटरप्रेट एंड देन वी हैव टू आंसर. So that's like the first point is part C, second one is analytical skills. Next जो आ रहा है वो आ रहा है part D. देखिए part D जो है वी आर फैमिलियर की इनमें से जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है फ्रेम होते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड एंड 50 में से हमको सिर्फ 35 क्वेश्चंस करने हैं. अगेन अ लॉट ऑफ चॉइसेस, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोगों को इस तरीके से मिलेंगे जो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जा रहे हैं, जो कि पार्ट सी में बहुत सारे क्वेश्चंस तरीके से आने वाले हैं. सिमिलरली इन पार्ट बी इसी तरीके के क्वेश्चंस दे यूजुअली फ्रेम, बट बिकॉज अगेन देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस वी हैव टू अटेम्प्ट 35 ओनली आउट ऑफ 50, so we can get the maximum marks again in part B. तो इस तरीके से करना है. एंड द ट्रिक इज लाइक, जब हम पार्ट सी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो पार्ट बी हमारा ऑटोमेटिकली वहां से प्रिपेयर हो जाता है. बट प्लीज बी श्योर कि बहुत सारे क्वेश्चन सर के ऊपर से जाने वाले हैं. एंड रिमेंबर देयर आर अ लॉट ऑफ चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो ये पोर्शन भी स्कोरिंग हो जाता है. टॉकिंग ऑफ फोर्थ वन, तो पार्ट ए के बारे में मैं यहाँ पे बात, आई वुड नॉट टॉक अबाउट पार्ट ए. लेकिन अगर आप लोगों को बहुत अच्छा स्कोर चाहिए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स देखिए ऐसे होते हैं जो जेआरएफ जिनको मिल चुका है बिना पार्ट ए को अटेम्प्ट किए. बट आई वुड सजेस्ट कि पार्ट ए जो है, पार्ट ए भी अटेम्प्ट कीजिए, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन तो कीजिए जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंट है, ताकि हम लोग का स्कोर जो है जेआरएफ के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको जेआरएफ मिल जाए. सो पार्ट ए इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Next is practice. Practice and practice and practice. I am emphasizing practice and practice and practice. तो बिना प्रैक्टिस के, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, मॉक टेस्ट हो, ये हम लोगों को रिपीटेडली प्रैक्टिस करते रहना है. वी हैव टू एनालाइज, वी हैव टू रेक्टिफाई की गलतियां हम कहाँ कर रहे हैं. गलतियां बहुत सारी होगी, ये पक्का है, लेकिन हम लोगों को जो है एनालाइज करते कि हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, उसको फिर हम लोगों को रेक्टिफाई करना. वी हैव टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स. रेक्टिफिकेशन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज यूनिट्स. लास्ट वन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको हम डेप्थ में जानेंगे. लास्ट जो आ रहा है पॉइंट वो आ रहा है स्ट्रैटेजी. बिना स्ट्रैटेजी के, एज आई सेड, ये जो एग्जाम है ये काफी टफ हो जाता है. फॉर दिस वी हैव टू गो थ्रू PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स हम लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव टू स्ट्रैटेजाइज
कि क्या ये एग्जाम जो है, ये जो पैनल है जो सेट करे एग्जाम, व्हाट एक्चुअली दे आर लुकिंग फॉर, उनको चाहिए क्या। तो उन क्वेश्चंस पे, उन टॉपिक्स पे वी हैव टू फोकस, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर, विच आर लाइक इम्पोर्टेंट यूनिट्स, क्या क्या यूनिट्स इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से करना है। तो 13 यूनिट्स की अगर हम लोग देखिए, अगेन बात करें 13 यूनिट्स की, तो 13 यूनिट्स में से अगर हम लोगों ने, देखिए सारी नहीं करनी होती, अगर हम लोगों ने 9 और 10 यूनिट्स बहुत अच्छे से कर ली है, बहुत अच्छे से, तो ये एग्जाम आसान हो जाएगा, बहुत बहुत तो नहीं, आसान हो जाएगा। तो गाइडेंस इज नीडेड, strategy is needed. We have to practice lots of papers, previous year's question paper, and repeatedly I have been sharing with candidates कि कट ऑफ एनालिसिस, ये भी स्ट्रैटेजी में आ रहा है। कट ऑफ एनालिसिस अगर नहीं किया, एटलीस्ट 5 इयर्स का जो कट ऑफ जा रहा है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि कितना कट ऑफ जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। फॉर इंस्टेंस जे जनरल के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, एंड अदर कैटेगरीज एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए कितना कट ऑफ जा रहा है। सो दिस इज अगेन, ये स्ट्रैटेजी में आ रहा है, कट ऑफ एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वंस वी आर लाइक फैमिलियर विद दिस, ये सब जो चीजें हम लोग ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, तो जो एग्जाम डिफिकल्टी है, वी वुड बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। इज इट इम्पॉसिबल? नो। इफ we are on the right track, if we are really passionate about science, if we really want to contribute to mankind, be clear with the goals, clear goals हैं, हमको अपने सब्जेक्ट से प्यार है, we love and love our subjects। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हैं, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। we have to love this exam, love these, love our subjects, और contribute to mankind actual में, like we have to think like a researcher, act as a researcher कि हम ऑलरेडी एक साइंटिस्ट है, बन चुके हैं, एक लेक्चरर है, बहुत अच्छी हम लोग को टेक्निफाइड पोजीशन मिल गई है। सो दिस एग्जाम is possible, we can track this, we'll be guiding you for the same। So all the very best, thank you so much, have a fantastic day।